the former home of Queen frontman Freddie Mercury, is for sale in London. Built in 1907, the Kensington property features a bar, a library. The air around Kensington has always carried whispers of legend. Tucked behind tall brick walls, beneath the shade of lush gardens, stands a house that isn't just a house, it's a monument. Built in 1907, this stately London property has witnessed decades of history. But it became truly iconic when it turned into the sanctuary of a man whose voice moved millions across the globe. Today, this former home of Freddie Mercury, the larger-than-life frontman of Queen, is once again in the spotlight. The property, known as Garden Lodge, is officially up for sale. From the outside, its ivy-clad walls and classical architecture tell a story of elegance. But those who know even a fraction of its history understand something deeper. This was the place where Freddie dreamed, created, and retreated from the roaring crowds. The mansion features a library, a private bar, and gardens designed to reflect his love of beauty. But more than its bricks and beams, Garden Lodge holds echoes of his laughter, his solitude, and the songs that changed the world. When the world lost Freddie in 1991, it lost one of rock's greatest voices. But what remained behind those walls was more personal, more intimate, and more astonishing than anyone expected. The story of this house isn't just real estate. It's a time capsule of a legend's life. When Freddie Mercury passed away in November 1991, the grief was instant and global. Crowds gathered outside Garden Lodge, leaving flowers, notes, and candles in the thousands. They weren't just mourning a singer. They were mourning an era. Freddie's voice had the power to turn stadiums into cathedrals of sound, and his charisma commanded the stage like few in history. His friends, bandmates, and loved ones were forced to step into the house he had built around his soul. Garden Lodge wasn't a mansion filled with cold luxury. It was warm, curated, and deeply personal. Behind its green door lay carefully chosen artworks, walls lined with books, a piano that had shaped anthems, and rooms filled with laughter, music, and sometimes silence. This was where he lived his final years. Not as a superstar, but as a man who loved life, beauty, and the people closest to him. Those who entered after his death spoke of a powerful stillness, like stepping into the middle of a song that had suddenly stopped. Every corner reflected Freddie's personality. Bold yet private, flamboyant yet deeply thoughtful. While millions mourned the public icon, those closest to him mourned the man whose love for art and life had transformed everything he touched. The sale of Garden Lodge today is not just a transaction. It's the reopening of a chapter that belongs to music history. To understand this house, you must understand the man behind it, the boy who was once Farrokh Bulsara, the shy dreamer who became Freddie Mercury. Long before the world knew his name, Freddie was born as Farrokh Bulsara on September 5, 1946 in Stone Town, Zanzibar. At the time, the island was still under British colonial rule, a vibrant port city that blended African, Arab, Indian, and European influences. His parents, Bomi and Jair, were proud members of the Parsi community of India. They traced their roots to Gujarat, a land known for its ancient traditions and vibrant culture. Their religion, Zoroastrianism, taught reverence for nature, fire, and truth, values that would subtly shape the man their son would become. Bomi worked as a cashier at the British Colonial Office, a stable but modest job. Their household was simple, respectful, and rooted in tradition. But even as a child, Freddie was anything but ordinary. One small physical detail hinted at a larger destiny. He was born with 4 extra incisors, giving him a slightly larger mouth. He would later say, half-jokingly, that this was his secret weapon. It allowed his vocal range to stretch in ways few singers could match. Zanzibar's coastal winds and cultural blend created the backdrop of Freddie's earliest memories. Music drifted through the air from radios and live performances at local gatherings. Even then, there was a spark in him, a quiet intensity that hinted at the artist he would become. He wasn't the loudest child in the room, but he was the one who noticed everything. No one in that small, close-knit family could have guessed that their son would one day stand on stages where millions would chant his name. Though born in Zanzibar, Freddie spent most of his childhood in India.
At the age of 7, he was sent to live with relatives and enrolled in piano lessons. It was here, in these quiet early years, that his love for music began to bloom. He didn't just learn melodies, he absorbed them. Music became a language he understood instinctively. At 8, Freddie was sent to St. Peter's School, Panchgani, a British-style boarding school near Bombay. It was a world of strict uniforms, morning assemblies, and academic discipline. But for Freddie, it was also a place of discovery. He collected stamps, an interest inherited from his father, and this childhood hobby remains immortalized today in the Postal Museum in London. But the real magic happened after sunset. By night, he immersed himself in rock and roll, listening to the likes of Elvis Presley, Cliff Richard, and Little Richard. At just 12, he formed his first band, the Hectics. They performed covers at school events with an energy that made him stand out from everyone else. Friends from that time recall how he could hear a song once and then replicate it on piano almost perfectly. He was gifted, but more than that, he was fearless. This was also the period when he started calling himself Freddie, a nickname that would eventually eclipse his birth name. Boarding school gave him discipline, but it also gave him freedom, the space to experiment with music and identity. These formative years in India were the quiet foundation for the roar that would come later. By 1963, Freddie returned to Zanzibar to live with his parents. But the island he came home to was changing rapidly. Political tensions were boiling beneath the surface, and by 1964, it all erupted in the Zanzibar Revolution. It was a violent uprising that overthrew the Sultan's Arab-led government. Thousands of Arabs and Indians were targeted and killed in the chaos. For the Bulsara family, it was clear. They could no longer stay. With urgency and fear, they fled to England, leaving behind the warm coastlines of Zanzibar for the cold, gray skies of London. It was a cultural shock. They settled in Middlesex, first at Hamilton Close, then Hamilton Road, and finally Gladstone Avenue. Life in England was modest. The family rebuilt from scratch, and for young Freddie, this was a turning point. The bright island boy had been thrust into a world of gray buildings and cautious beginnings. But it was also a land of opportunity, especially for someone whose dreams stretched beyond the ordinary. Freddie was different, and England gave him the stage to let that difference grow. While many immigrants blended quietly into the background, he absorbed the new world around him, its art, its music, its fashion. In a strange way, the revolution that displaced his family also set him on the path to becoming the icon the world would one day know. Freddie's journey to stardom didn't begin with spotlights. It began with hustle. In London, he enrolled at Isleworth Polytechnic and later at Ealing Art College, where he studied graphic design. His artistic eye was sharp, his sense of aesthetics already ahead of its time. In 1969, he graduated with a diploma, a piece of paper that would later help shape one of the most iconic rock band logos in history. But dreams don't pay bills. To make ends meet, Freddie took odd jobs, one of them as a baggage handler at Heathrow Airport. Between flights, he carried more than suitcases. He carried ambition. On weekends, he sold vintage scarves and Edwardian clothes at Kensington Market alongside Roger Taylor. Those who knew him then describe him as shy, soft-spoken, almost reserved. But they also remember that spark, the way he lit up at the mention of music. Offstage, he was quiet. On stage, he was a storm waiting to happen. These were the years that shaped his resilience. He wasn't born on a stage. He built his way to it. Freddie's first steps into the music world were anything but smooth. In 1969, he became the frontman for Ibex, a Liverpool-based blues rock band later renamed Wreckage. Their music leaned heavily on the sounds of Jimi Hendrix, raw and experimental. Freddie lived above a pub on Penny Lane during this time, immersing himself in Liverpool's thriving music culture. But the band fizzled out before they could make their mark. Undeterred, he joined another band, Sour Milk Sea. Once again, it didn't last long. To many, this might have felt like failure. To Freddie, it was rehearsal. Each short-lived band gave him something: confidence, experience, and the certainty that music was where he belonged.
These early years are often overlooked, but they were crucial. They were the chapters of trial and error that prepared him to step onto a much bigger stage. Freddie wasn't just finding a band, he was finding himself. In 1970, everything began to align. Freddie joined forces with Roger Taylor and Brian May, becoming the frontman of their band Smile. A year later, John Deacon joined on bass, and the final lineup was complete. But Freddie wanted more than just music. He wanted a name that would stand for something grand. When he suggested Queen, the others hesitated. It was bold, provocative, and loaded with meaning. But that was exactly why he loved it. It sounded regal. It sounded unforgettable. Around the same time, he legally changed his surname to Mercury. The transformation was complete. Farrokh Bulsara had become Freddie Mercury. His art background came into play when he designed the band's logo, the Queen crest. Using the zodiac signs of all four members, lions for Taylor and Deacon, a crab for May, and fairies for himself, a Virgo, he created a royal-looking emblem crowned by a phoenix. It wasn't just a band. It was an identity. Their sound was fresh, theatrical, and powerful. Freddie's stage presence was magnetic. Even before their first big hits, you could feel they were destined for greatness. Queen wasn't just playing rock. They were rewriting its rules. Freddie Mercury's voice was unlike any other. His natural range lay in baritone, but he pushed himself into soaring tenor heights that gave Queen a vocal power few bands could rival. And then came the songs, timeless anthems that would echo through stadiums for generations. Freddie's fingerprints are on the band's greatest hits: Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, and so many more. Each one sounded different because Freddie refused to be boxed into one style. One song might feel like a labyrinth of shifting keys and operatic layers. Another might be stripped down to a few simple chords. His inspiration came from everywhere: opera, rock, pop, theater, and even silence. He often said he couldn't read music fluently, but he didn't need to. He composed by instinct. He'd sit at the piano, let his hands move, and magic would happen. And then there was the stage. When Freddie stepped onto it, everything else faded. His presence could make tens of thousands feel like they were in the front row. Whether it was Wembley, Madison Square Garden, or a small club, he owned the moment. He wore capes, crowns, leotards, anything that made the performance larger than life. Queen's rise wasn't overnight, but when it happened, it was unstoppable. By the late 1970s and 1980s, they weren't just one of the biggest bands in the world. They were defining what it meant to be rock royalty. Freddie Mercury's story is not just about music. It's about transformation, courage, and the power of being unapologetically yourself. His voice made people sing. His performances made them believe. And his image broke boundaries that once seemed unshakable. Even decades after his passing, his songs remain anthems. His stage outfits are iconic. His house, Garden Lodge, stands as a reminder that behind the larger-than-life star was a man who loved beauty, art, and life itself. Freddie Mercury showed the world that greatness doesn't come from fitting in. It comes from standing out. He left this world far too soon, but his impact is immortal. Every time the opening notes of Bohemian Rhapsody echo through speakers, every time a crowd belts We Are the Champions together, Freddie lives again. Garden Lodge may now be on the market, but its walls still carry his laughter. Its halls still echo his melodies. And the world will forever remember the boy from Zanzibar, who became the king of rock. फ्रेडी मर्क्यूरी के पर्सनल लाइफ में रोमांस और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों शामिल थे। सबको पता था कि फ्रेडी का स्टेज पर्सोना फ्लम्बॉयंट, लाउड और पावरफुल था, लेकिन उसके अंदर एक इंसान बहुत ज्यादा प्राइवेट और सेंसिटिव भी था। 1970 के दौरान उसकी जिंदगी में एक खास शख्स आया, मैरी ऑस्टिन। फ्रेडी ने मैरी को अपनी जिंदगी का लव ऑफ माई लाइफ कहा था। दोनों का रिश्ते बहुत गहरा था और कई साल तक वो साथ रहे। जब फ्रेडी ने अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करनी शुरू की, तब भी मैरी उसकी जिंदगी में सेंट्रल फिगर बनी रही। उन्होंने कभी एक दूसरे को छोड़ा नहीं। फ्रेडी ने अपनी विल में गार्डन लॉज मैरी के नाम कर दिया। मैरी ने बाद में कहा कि फ्रेडी का दिल किसी और का नहीं था। इसके अलावा फ्रेडी के कई रोमांटिक रिलेशनशिप्स हुए, खासकर उसका बॉन्ड जिम हटन के साथ बहुत खास था।
जिम उसका पार्टनर रहा उसके लाइफ के आखिरी 6 सालों तक और उसने फ्रेडी को एंड तक सपोर्ट किया। फ्रेडी ने कभी अपने प्राइवेट इमोशंस का दिखावा नहीं किया, लेकिन उसके करीबी लोग जानते थे कि वो एक बहुत लॉयल, लविंग और जेंटल इंसान था। फ्रेडी मर्क्यूरी ने सिर्फ म्यूजिक में नहीं बल्कि फैशन में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्टेज पर उसका फ्लैम्बॉयंट अंदाज, टाइट वाइट पैंट्स, लेदर जैकेट्स, ग्लिटरी टॉप्स, केप्स और आइकॉनिक मस्टाश 1980s का एक फैशन रेवोल्यूशन था। फ्रेडी का ड्रेसिंग सेंस थिएट्रिकल और बोल्ड था। उसने स्टेज परफॉर्मेंस को एक विजुअल एक्सपीरियंस में बदल दिया। फ्रेडी का बिलीव था कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं, देखा भी जाता है। इसलिए उसने अपने हर कॉन्सर्ट में आउटफिट्स और कॉस्ट्यूम्स का ऐसा ब्लेंड किया जो फैंस को याद रहे। आज भी उसके स्टेज आउटफिट्स दुनिया के कई फैशन शोज में इंस्पायर करते हैं। फ्रेडी मर्क्यूरी ने अपने अंदाज को मेन स्ट्रीम बनाया और स्टेज पर इंडिविजुअलिटी का नारा लगाया। क्वीन ने सिर्फ यूके या यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में अपना जदू चलाया। बोहेमियन रैप्सोडी ने म्यूजिक इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए। उस दौरान कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स 6 मिनट का सॉन्ग रेडियो पर नहीं चलता था। फिर भी फ्रेडी मर्क्यूरी की विजन ने उसे नंबर 1 बना दिया। वी विल रॉक यू और वी आर द चैंपियंस जैसे एंथम्स हर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बजते हैं। बैंड ने वर्ल्ड टूर्स किए, जापान, साउथ अमेरिका, यूएसए, यूरोप, हर जगह फैंस उन्हें देखने के लिए भीड़ लगा लेते। फ्रेडी का लाइव परफॉर्मेंस फैंस को हिप्नोटाइज कर देता। आज भी क्वीन लाइव एट वेम्बली और रॉक इन रियो कॉन्सर्ट्स को बेस्ट परफॉर्मेंसेस में काउंट किया जाता है। 1980s के आखिरी दौरान फ्रेडी की हेल्थ खराब होने लगी। 1987 में उन्हें डियग्नोजे हुआ HIV एड्स। उस वक्त इस बीमारी का इलाज मुश्किल था और सोसाइटी में स्टिग्मा बहुत ज्यादा था। फ्रेडी मर्क्यूरी ने अपनी इलनेस को दुनिया से छुपा के रखा। सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को मालूम था। जिम हटन, मेरी ऑस्टिन और उसके बैंडमेट्स ने उसकी कंडीशन में उसका साथ दिया। फ्रेडी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जारी रखी। उसका जाज़बा लाजवाब था। उसने कहा था, आई विल कीप मेकिंग म्यूजिक अंटिल आई कांट स्टैंड एनी मोर। 3 नवंबर 1991 को फ्रेडी मर्क्यूरी ने दुनिया को अपनी डायग्नोसिस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। सिर्फ एक दिन बाद 25 नवंबर को उसका इंतकाल हो गया। उसकी डेथ ने पूरी दुनिया को हिला दिया। फ्रेडी मर्क्यूरी की मौत पर फैंस ने दुनिया भर में शिद्दत से गम मनाया। लंदन के गार्डन लॉज के बाहर लोग फूल और कैंडल्स लेकर आए। टीवी चैनल्स ने उसकी जिंदगी और म्यूजिक को याद किया। फ्रेडी मर्क्यूरी ने अपने म्यूजिक के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाई थी और उसकी मौत एक दौर के खत्म होने का एहसास थी। 1992 में एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट हुआ, द फ्रेडी मर्क्यूरी ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट फॉर एड्स अवेयरनेस, जिसमें दुनिया के मशहूर सिंगर्स ने परफॉर्म किया। यह इवेंट ने एड्स अवेयरनेस में बहुत बड़ा रोल अदा किया। फ्रेडी मर्क्यूरी का नाम अब सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन गया। फ्रेडी मर्क्यूरी को म्यूजिक का जीनियस कहना कोई बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं। उसने सिर्फ बोहेमियन रैप्सोडी जैसे सॉन्ग्स नहीं लिखे, बल्कि हर जॉनर में एक्सपेरिमेंट किया। रॉक, ओपेरा, पॉप, ब्लूज। उसका वोकल रेंज 4 ऑक्टेव्स तक माना जाता है। जब वो स्टेज पर परफॉर्म करता था तो सिर्फ गाता नहीं था, बल्कि एक कहानी सुनाता था। उसकी सॉन्ग राइटिंग अनप्रिडिक्टेबल थी। हर सॉन्ग में नए आइडियाज, नए लेयर्स और नए इमोशंस होते। उसने क्लासिकल ओपेरा को रॉक में इंट्रोड्यूस करके म्यूजिक का फ्यूचर बदल दिया। फ्रेडी मर्क्यूरी की मौत के बाद उसका मैजिक कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। क्वीन के सॉन्ग्स दोबारा चार्ट्स पर आए। नए जनरेशंस ने उसके म्यूजिक को डिस्कवर किया। 2018 में बोहेमियन रैप्सोडी रिलीज हुई, जो उसकी जिंदगी पर बेस्ड थी। फिल्म ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़े और नए फैंस बनाए। फ्रेडी मर्क्यूरी को मल्टीपल अवार्ड्स पोस्टुमसली दिए गए, इंक्लूडिंग इंडक्शन इनटू द रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम। आज भी उसका इन्फ्लुएंस काउंटलेस सिंगर्स और बैंड्स पर नजर आता है। फ्रेडी मर्क्यूरी सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं था, वो एक मूवमेंट था। उसने इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट किया, बैरियर्स को तोड़ा और दुनिया को दिखाया कि आर्ट किसी लिमिट को नहीं मानता। उसकी आवाज, उसका स्टेज प्रेजेंस, उसका फैशन सेंस और उसका जज्बा आज भी नए कलाकारों को इंस्पायर करता है। उसका नाम हमेशा के लिए उन लोगों में लिखा गया है जो सिर्फ दुनिया में आए नहीं, बल्कि उसे बदल कर चले गए। फ्रेडी मर्क्यूरी का क्रिएटिव प्रोसेस किसी मैनुअल या फॉर्मूला का मोहताज नहीं था। वो इंस्टिंक्ट से म्यूजिक बनाता था। वो पियानो पर बैठकर मेलोडीज को फ्लो में लिखता था, बिना किसी टेक्निकल बाउंड्री के। फ्रेडी ने कभी क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन का लेवल प्रोफेशनली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस के बराबर था। वो अपने लिरिक्स में कहानियां लिखता था, कभी अपने इमोशंस का इजहार करता, कभी फैंटेसी वर्ल्ड्स क्रिएट करता।
बोहेमियन रैप्सोडी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें ओपेरा, रॉक और बैलेड तीनों स्टाइल्स को सीमलेसली मिला दिया गया। फ्रेडी के लिए स्टूडियो एक मंदिर जैसा था, जहां वो अपनी रूह का हर एहसास गाने में डाल देता था। स्टेज पर फ्लाम्बोयंट परसोना के पीछे एक परफेक्शनिस्ट इंसान था। फ्रेडी मर्क्यूरी को छोटी से छोटी डिटेल पर भी पूरा कंट्रोल चाहिए होता था। चाहे रिकॉर्डिंग सेशन हो या लाइव रिहर्सल, वो हर चीज को बार बार परफेक्ट करता था। बैंडमेट्स ने कई दफा कहा कि फ्रेडी के साथ काम करना इंटेंस होता था, क्योंकि वो एक्सेलेंस के अलावा कुछ नहीं मानता था। उसका बिलीव था कि अगर म्यूजिक लोगों के दिल को छू नहीं सकता, तो वो सिर्फ आवाज है, आर्ट नहीं। इसी वर्क एथिक ने क्वीन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। फ्रेडी मर्क्यूरी के करियर में कई ऐसे कॉन्सर्ट्स हुए जो आज भी म्यूजिक हिस्ट्री में लेजेंड बन चुके हैं। सबसे मशहूर परफॉर्मेंस 1985 का लाइव एड कॉन्सर्ट था। वेम्बली स्टेडियम में 72,000 लोगों के सामने फ्रेडी ने ऐसा शो दिया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। रेडियो गागा, वी आर द चैंपियंस, बोहेमियन रैप्सोडी। फ्रेडी का हर नोट स्टेडियम में गूंज रहा था। टीवी पर 1.9 बिलियन लोगों ने यह परफॉर्मेंस देखी। ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जहां फ्रेडी मर्क्यूरी ने पूरी दुनिया को अपनी आवाज से जोड़ दिया। फ्रेडी मर्क्यूरी को कैट्स से बहुत प्यार था। उसके घर में कई कैट्स होती थीं, जैसे डिलाइला, टिफनी, टॉम, ऑस्कर, रोमियो, जूलियट, गोलायत और लिली। फ्रेडी उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। टूर्स पर भी वो फोन कॉल पर अपने कैट्स से बात करता था और अपनी पार्टनर से उनका हाल पूछता था। उसने अपनी एल्बम मिस्टर बैड गाय को अपनी कैट्स के लिए डेडिकेट भी किया था। डिलाइला, जो उसकी फेवरेट कैट थी, उसके लिए उसने एक गाना भी बनाया। फ्रेडी का कैट्स के साथ ये प्यार उसके जेंटल और इमोशनल साइड को दिखाता है, जो स्टेज पर रेयरली दिखाई देता था। फ्रेडी मर्क्यूरी सिर्फ एक पावरफुल सिंगर नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट सॉन्ग राइटर भी था। उसने बैंड के कई ग्रेटेस्ट हिट्स लिखे। बोहेमियन रैप्सोडी, डोंट स्टॉप मी नाउ, समबडी टू लव, किलर क्वीन, वी आर द चैंपियंस। उसका लिखा हर सॉन्ग अपने अंदाज में अलग था। फ्रेडी एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी का मास्टर था, लिरिक्स को पोएटिक और मिस्टीरियस बनाता था। इस वजह से उसके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, फील किए जाते थे। फ्रेडी मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस आज भी काउंटलेस आर्टिस्ट्स पर देखा जा सकता है। लेडी गागा ने अपना स्टेज नेम उसके हिट सॉन्ग रेडियो गागा से इंस्पायर्ड किया। एडम लैम्बर्ट ने क्वीन के साथ टूर्स में उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। एल्टन जॉन, डेविड बोवी, जॉर्ज माइकल और बहुत से और सिंगर्स ने ओपनली कहा कि फ्रेडी उनके लिए एक इंस्पिरेशन था। फ्रेडी ने शोमैनशिप, वोकल्स और इंडिविजुअलिटी का जो स्टैंडर्ड सेट किया, उसने म्यूजिक इंडस्ट्री का गेम बदल दिया। फ्रेडी मर्क्यूरी का मीडिया के साथ रिश्ता इंटरेस्टिंग था। वो इंटरव्यूज में विटी, चार्मिंग और अनप्रेडिक्टेबल होता था, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ पर वो हमेशा टाइट लिप्ड रहता। 1980s में जब टैब्लॉइड न्यूज़पेपर्स ने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू की, फ्रेडी ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी म्यूजिक को बोलने दिया। वो कहता था, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पॉप स्टार, आई वॉन्ट टू बी अ लेजेंड। और वाकई में उसने मीडिया को अपनी पर्सनैलिटी का सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जो वो चाहता था। फ्रेडी मर्क्यूरी सिर्फ सिंगर नहीं, एक टैलेंटेड विजुअल आर्टिस्ट भी था। उसने ग्राफिक डिजाइन में डिग्री ली थी और क्वीन का आइकॉनिक क्रेस्ट खुद डिजाइन किया। इस क्रेस्ट में उसने हर बैंड मेंबर का ज़ोडिएक साइन इनकॉर्पोरेट किया। उसको आर्ट, पेंटिंग और डिजाइन से घेरा लगाव था। अगर वो सिंगर न बनता तो शायद एक टॉप आर्टिस्ट होता। उसकी क्रिएटिविटी म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं थी, उसकी सोच हमेशा आर्ट के हर फॉर्म में उभार कर आती थी। फ्रेडी मर्क्यूरी ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट चैरिटी के लिए नहीं ली, लेकिन उसकी विल और उसके बाद बनने वाली द मर्क्यूरी फिनिक्स ट्रस्ट ने एड्स अवेयरनेस और फंडरेजिंग में दुनिया भर में काम किया। उसका नाम एक मूवमेंट बन गया जो लोगों को एजुकेट करता, उनकी मदद करता और स्टिग्मा को तोड़ता है। फ्रेडी मर्क्यूरी ने अपने फैंस को म्यूजिक के जरिए यूनाइट किया और अपने डेथ के बाद भी उनका लाइफ इंपैक्ट करता रहा।